Namaste Gurgulians, how are you? I hope you are fit and fine. Beta, in the last video I told you about error in addition. Okay. Today I will do now first question, first numerical of error in division. Okay, error in division we did in last video. So now we will do the numerical of error in division. Beta, in your 10th class you studied that resistance is equal to ratio of potential difference divided by to the current flowing in the wire. You studied that R is equal to V upon I. Beta, now listen. Question is that I speak the question, write the statement. The potential difference across ends of a wire is 40 plus minus 0.1 volt and current flowing in wire is 10 plus minus 0.2 ampere. Then find relative error, percentage error and proper value of resistance. बेटा एक बात का जवाब दीजिए. Tell me one thing. In case of addition and subtraction, firstly we calculate error, then we calculate relative error. But in case of beta multiplication or division, firstly we find the relative error, because beta पहले जो रिजल्ट आता है डिवीजन में और बेटा मल्टीप्लिकेशन में वो क्या आता है. लिसन, आई नो R is equal to V upon I. If I write beta here, what if I write here in the form of error, relative error, then what you find the answer? Delta R upon R is equal to delta V upon V plus delta I upon I. Because in case of division I know firstly we got the relative error. और प्लस माइनस डालने की जरूरत नहीं है बेटा. आई टोल्ड यू वंस दैट प्लस माइनस नो नीड टू पुट. इफ प्रॉपर वैल्यू वी हैव टू राइट, फाइंड द प्रॉपर वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस. आर इज इक्वल टू 10 ओम प्लस माइनस 0.1, जो भी इस तरह में प्लस माइनस डालने की जरूरत होती है, इन प्रॉपर वैल्यूज़ में डालने की जरूरत होती है जब प्रॉपर वैल्यू लिखते हैं. जब एरर आपने निकाला है या रिलेटिव एरर निकाला है तब आपको प्लस माइनस लिखने की बेटा कोई जरूरत नहीं होती. नो बेटा लिसन, टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा वी. दिस बेटा एक बात मैं आपको बता दूं बच्चे, वी आपको ये दिया हुआ है, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस एंड हेयर वी फॉर वोल्ट. ओके, सॉरी दिस इज एम्पियर. करंट इज इक्वल टू दिस इज एम्पियर, करंट इज एम्पियर. ओके फाइनल. नाउ लिसन बेटा, एक बात याद रखें बच्चे, वी की वैल्यू ये है बेटा, दिस इज द एरर इन इट. आई की वैल्यू ये है, दिस इज एरर इन इट. दिस इज वी, दिस इज डेल्टा वी, दिस इज आई, दिस इज डेल्टा आई. ओके नाउ लिसन, what is delta V? 0.1. what is V? 40 plus what is delta I? 0.2. what is I? 10. then it will be 1 by 400 and it will be, listen, 1 by 50. take the LCM and we can find the value of relative error. In case of multiplication and division, firstly we get the relative error. This is the relative error, 9 by 400 in resistance. Now if I tell you, if I ask you what is the value of error, this is the relative error, what will be error? So we have to find the value of delta R. Now R will go on that side, then it will be, tell me, 9 by 400 into R. And now tell me what is the value of R? R is V by I, and I have told you V is this, I is this, so V by I will be 4. Now it will be 4. Okay, now it will be, tell me, again I tell you, relative error has no unit beta, but error has unit. This is ohm. ओके, एरर की यूनिट हो जाएगी. ऐसा क्यों? क्योंकि आर आपका उधर चला गया. दिस आर हैज गॉन हेयर एंड ऑन द बोथ साइड ऑफ इक्वल साइन
unit is always same. Okay, so it has unit ohm, but this relative error has beta no unit. Now tell me beta, what will be percentage error? What will be percentage error? Multiply relative error with 100, we get the percentage error. Tell me what will be percentage error into 100. If you will do, then 20 cancel by 20, 9 by 4 means 2.25 will be the percentage error. Okay, final. Okay, the question was the find relative error, we have found. Error we have found. Percentage error we have found. Now question is what is the proper value of resistance? अब बेटा गौर से सुने, प्रॉपर वैल्यू क्या हो जाएगी? प्रॉपर वैल्यू R प्लस माइनस डेल्टा आर. अब R कितना है बेटा? टेल मी आपके पास V बाय I. आई हैव टोल्ड यू नाउ R इज V बाय I. R इज 4. Now tell me what is delta R? Now this is delta R. Now you have to write plus minus 9 by 100 ohms. This is the proper value of resistance. Okay, आप इसको भी लिख सकते हो R प्रॉपर पूरे तरीके से जो वैल्यू, आप इसको R भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम इज. जैसे हमने यहाँ पर V को V लिखा हुआ है और मैंने वो कहा है दिस इज V, बट एक्चुअल में V ये है, दिस इज डेल्टा V, दिस इज I, दिस इज डेल्टा I. सो दिस कैन बी रिटन एज R, दिस इज डेल्टा R. Now tell me what is the value of R? R has value 4. This represents only its error. Okay, small error which can take place due to many reasons, as I have told you, instrumental error, random error, many reasons are there for which error takes place. Okay, this is the, in this way we can solve the questions. Clear beta? This is very easy beta. Now beta, error in addition we have done, error in subtraction we have done, error in multiplication we have done, error in division we have done. Now beta, we will do the last point, errors in powers. Listen beta, this is very important. Errors in powers. Now suppose x has value a raised the power m and b raised the power n. Beta, and here a and b are two physical quantities, but m and n are two numbers, just two numbers like 2, 5, 6, 7. These are the numbers. Okay, suppose x is equal to a raised the power m and b raised the power n. Okay, now powers are there. Okay, how will you solve? Now beta, in proper form how will you write? X plus minus, tell me, delta x, okay, is equal to, how will you write it? A plus minus delta a raised the power m, b plus minus delta b raised the power n. We will write it, because if error are there in a and b, then obviously error will be there in x. Now beta, as in multiplication you did that, take a common from here and take b common from here. Now and take x common from here, then it will be x 1 plus minus delta x upon x is equal to. Now beta, tell me, if we take a common from here, then you know power will also come with it. A raised the power m will be common, and inside it will be 1 plus minus delta a by a. And here also b, if we take b as common, then power will also come with it, and it will be 1 plus minus delta b by b raised the power n. Now listen, if we write b raised the power n with it, then it will be a raised the power m into b raised the power n, it is equal to x. Then it will be cancelled by x. Simply we can do it. Now beta, listen, sorry, one thing more, listen. When a is taken out, power also come out, then it will be 1 plus minus power will be there m, power will be there beta. मैं आपको एक बार बता दूं बच्चे, suppose a plus b raised the power m is there. If we take a as common, then power will also taken as common. Inside it will be 1. बेटा ऐसा लगेगा कि a ही बाहर गया है, गया तो a बाहर, देखो बेटा बाहर तो आपने a ही निकाला है, पावर भी साथ में आ गई,
अब अंदर आप यही ट्रीट करोगे कि a ही बाहर गया है, तो अंदर क्या हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ तो है नहीं तो एक a से मल्टीप्लाई कर दिया, एक a से डिवाइड कर दिया, ये हो जाएगा ना, ये द पावर n, पावर तो रहेगी ना साथ में। यू विल से दैट हाउ a कैन बी टेकन एज कॉमन, बिकॉज a यहाँ तो है, यहाँ है नहीं, तो मैंने काम किया एक a से मल्टीप्लाई कर दिया, एक a से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई वाला बाहर आ गया, डिवाइड वाला आ जाएगा। क्लियर? इन द सिमिलर वे a is taken as common, then power will also come out, a raised to the power m, inside आपको ऐसा लगेगा कि a is taken out common, then it will be 1 plus minus delta a upon a raised to the power m. Clear beta? It's very easy. Now beta, I have told you in the last video that binomial theorem, it says that if this number is very very less than 1, then power can be written with it, power can be written with it. Clear? Here also, if this number is very very less than 1, then power can be multiplied with it. Clear? Then it will be 1 plus minus delta x upon x is equal to, tell me, power will be multiplied to this number if this number is very very less than 1. I have told you in last video that 1 plus x raised to the power n, if x is very very less than 1, very very less than 1, very very, you know, 1 in front of 1000 is very very less than 1, 1 is very very less than 1000. In the similar way, if x is very very less than 1, means x is 0.0001, 001, बहुत छोटा है ना, तो देन पावर कैन बी मल्टीप्लाइड टू x, देन इट विल बी 1 प्लस nx, सिंपल बन जाता है, इट विल बी सिंपल। नाउ बेटा लिसन, इट विल बी, टेल मी, पावर विल बी कम टू दिस, power will be multiplied to this, it will be 1 plus minus m delta a by a. Okay, similarly n will be multiplied to this, 1 plus minus n delta b by b. Clear? Now simply we will multiply these both, firstly 1 to both and then we multiply these to both, then it will be 1 plus minus delta x upon x is equal to 1 is multiplied to both, it will be 1 plus minus, tell me beta, 1 plus minus n delta b upon b, then this multiplied to both, but beta when this is multiplied to this, these both are very small number and multiplication can be cancelled out as I told you in the last video. Now this only be multiplied by this. Clear beta? Well, now 1 is cancelled by 1. Now we get delta x by x is equal to, listen, plus minus delta x by x is equal to, again we will have 4 cases. Again we will have 4 cases, plus minus n delta b by b plus minus m delta a by a. Clear? So simply I will talk about maximum, and every time I have told you maximum value is plus minus, tell me, n delta b by b plus m delta a by a. और बेटा प्लस माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। और आपको एक बात और बता दूँ, याद रखने का तरीका कि आप इसको याद कैसे रखोगे। लिसन, ये तो बिल्कुल बेटा जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन में किया था, डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। इसमें अलग क्या हुआ, जो पावर थी ना, लिसन, जो बी की पावर थी वो बी के साथ आ गई और जो ए की पावर थी वो ए के साथ आ गई। ओके, जो बी की पावर थी वो बी के साथ आ गई और जो ए की पावर थी बेटा वो ए के साथ आ गई। ओके, दिस इज सिंपल क्वेश्चन, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, वी कैन डू इट वेरी इजीली बेटा। क्लियर? नाउ आई विल टॉक अबाउट इट्स वन न्यूमेरिकल ऑल्सो, लेकिन उसके पहले एक बच्चे आपको बात बता दूँ मैं। दिस थिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, दिस थिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिसन बेटा, इफ आफ्टर बिफोर डूइंग द न्यूमेरिकल I want to tell you one thing beta, it's very important beta, listen. This question was of, okay, now listen, what is the question, what is the thing beta? Suppose in product I take, suppose you know curved surface area of cylinder, curved surface area of cylinder is 2 pi RH,
2 पाई RH। आपको एरर रेडियस में भी दे दिया, आपको एरर हाइट में भी दे दिया, और आपसे पूछा जा रहा है एरर सरफेस एरिया में कितना होगा, और ये दोनों मल्टीप्लाई में है, एज बोथ आर इन मल्टीप्लाई, देन व्हाट वी विल फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेटिव एरर। और बेटा आई टेल यू वन थिंग, यू नो व्हाट विल बी रिलेटिव एरर इन एरिया, लिसन, डेल्टा S बाय S इज इक्वल टू डेल्टा R बाय R प्लस डेल्टा H बाय H। 2 पाई वहाँ पे नहीं आएगा बेटा, 2 पाई नहीं आएगा रिलेटिव एरर निकालते हुए। मैं आपको एक बात से बता दूं बच्चे, S इज इक्वल टू, सपोज आपको इस इफ ही इज आस्किंग इफ प्लस माइनस डेल्टा R इज एरर इन इट एंड प्लस माइनस डेल्टा H इज एरर इन इट, okay, find relative error in S, then you know these both are in multiply and constant number is being multiplied here. Then listen, what will be relative error? Delta S by S is equal to delta R by R plus delta H by H। आप कहेंगे सर इसमें 2 पाई कहाँ गया? 2 पाई यहाँ पे नहीं आएगा, रिलेटिव एरर में 2 पाई नहीं आएगा। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, एक मिनट ध्यान से देखिए, इसको मैं साफ कर देता हूँ। लिसन बेटा, सपोज कीजिए इट हैज़ वैल्यू, सपोज मैं आपको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करवाता हूँ। लिसन, ए क्वेश्चन इज देयर, क्वेश्चन दैट इफ while measuring, question is there, write the statement, if while measuring mass of a body it is, इसको भूल जाओ, ये मैं आपको ये इसी तरह का क्वेश्चन है। इफ वाइल मेजरिंग मास ऑफ द बॉडी, किसी बॉडी के मास को मेजर करने के लिए मतलब ये उसमें कमी आई, ऐसा लगा कि यहाँ तक कमी आ सकती है मैक्सिमम, तो दिस द मास ऑफ बॉडी एंड स्पीड ऑफ बॉडी इज okay, fine. Now tell me what will be error and relative error in its kinetic energy. But now listen, kinetic energy is equal to half mv square, half mv square. Now beta listen, this is the formula of powers. पावर आ गई ना यहाँ पे, मल्टीप्लाई में पावर आ गई, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? जो भी हमने किया है, पावर्स। नाउ लिसन, व्हाट विल बी रिलेटिव एरर इन के? What will be relative error in K? Delta K by K, listen, is equal to delta M by M। इसकी पावर होती ना कुछ, वो इसके आगे आ जाती, अभी हमने किया था, बट इसकी पावर तो है ना, अभी इसकी पावर तो है, तो वो इसके साथ आ जाएगी, प्लस 2 डेल्टा V बाय V। अभी हमने जो क्वेश्चन किया था बेटा, x इज इक्वल टू a रेज द पावर m, b रेज द पावर n, देन टेल मी व्हाट वाज डेल्टा x बाय x, m डेल्टा a बाय a प्लस n डेल्टा b बाय b, ऐसा किया आपने। सो हियर m रेज द पावर 1, सो इट विल बी कम अलोन, इट्स पावर इज 2, सो 2 विल बी इन फ्रंट ऑफ इट। जैसे b की पावर n है तो n पहले आ गया, ऐसे ऐसे दिस विल बी। बेटा एक बात गौर से सुनिए, 1/2 यहाँ कहीं नहीं आएगा while taking relative error, clear? Now tell me what will be relative error? It will be delta k upon k is equal to delta m upon n. Tell me 0.1 upon 10, it will be 1/100. Delta v by v 0.2 by 8, it will be 180, 1/40, sorry 1/40, but 2 is multiplied here, it will be 1/20, 1/20, then you will find its LCM, then it will be 6/100, it will be relative error in kinetic energy. What will be percentage error in kinetic energy? Multiply it by 100, multiply it by 100, 6% will be the percentage error in the kinetic energy, 6% will be the percentage error
इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। क्लियर, दिस इज द। लेकिन अगर उसने कहा है ना रिलेटिव एरर नहीं, अब एरर निकालो, एरर, तो बेटा पता है क्या करोगे, वही तरीके से के को लेके उधर चले जाइए। तो डेल्टा के क्या हो जाएगा, के इंटू टेल मी 6/100। नाउ अब जब के की वैल्यू पुट करेंगे ना आप, देन यू विल टेक हाफ एम स्क्वायर। ओके, देन डेल्टा के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 6/100। नाउ एम इज 10, क्योंकि मैं आपको एक बात पहले कह चुका हूं, दिस इज एम, दिस इज डेल्टा एम, दिस इज वी, दिस इज डेल्टा वी। ओके, नाउ इट विल बी हाफ एम इज 10, वी इज 8, वी स्क्वायर 64 into 6 by, solve it and it will be the change in kinetic energy, change in it is the error in kinetic energy, delta k it is. Clear, final beta. So while taking relative error, this constant will not come here. Okay, but when you find the relative error delta k by k is equal to 6/100, you have found. Now to find the error delta k, k will go there and we will put the value of k. Now half will come, half m square, then this will be the answer. Clear beta? Okay, this is the case. Or now in this case listen, this case is of multiply. Now listen beta, if suppose in this case I change the question. Now listen, this is r centimeter. नाउ इस क्वेश्चन के इसमें कन्वर्ट कर रहा हूँ, रेडियस इज दिस एंड हाइट इज टेकन एज दिस। नाउ टेल मी व्हाट विल बी रिलेटिव एरर इन सरफेस एरिया, व्हाट विल बी रिलेटिव एरर इन सरफेस एरिया। What will be relative error in surface area beta? Listen, now they are multiply, this constant will not come there, delta s by s is equal to delta r by r plus delta h by h, सिंपल मल्टीप्लिकेशन केस है बेटा। तो बेटा यहाँ पर 2 पाई नहीं आएगा, देन इट विल बी व्हाट इज डेल्टा r by r, टेल मी 1/100, व्हाट डेल्टा h by h 1/40. Okay, simply. Now beta what will you do, delta s by s is equal to 100 will be LCM, sorry it will 200 will be LCM, it will be 2 plus 5, 7/200. Delta s by s is relative error is 7/200. To find the percentage error, multiply it with 100, it will be 3.5%, it will be percentage error. लेकिन बेटा अगर कोई ये कहे ना व्हाट इज एरर इन सरफेस एरिया, यू हैव टू फाइंड डेल्टा एस, एस विल गो ऑन दैट साइड। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ एस 2πRh, अब यहाँ 2π आ जाएगा, रिलेटिव एरर में 2π नहीं आएगा, अब आ जाएगा, देन इट विल बी 2πRh इंटू 7/200। नाउ सॉल्व इट एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, आर हैज वैल्यू 10, बेटा आर की ये सारी वैल्यू नहीं है, आर हैज वैल्यू 10, दिस इज डेल्टा आर, ये उसके अंदर एक त्रुटि है, दिस इज द वैल्यू ऑफ एच, दिस इज डेल्टा एच, ये थोड़ा उसको अलग कर दिया गया। आप ये मत कहिए कि पूरी एच की वैल्यू है, नो, दिस इज एच, दिस इज आर। ओके, सो पुट द वैल्यू ऑफ आर एज 10 एंड एच एज 8। क्लियर, दिस इज द क्वेश्चन, इन दिस वे वी कैन फाउंड how you will write the proper value of surface area. Tell me how will you write proper value, s plus minus delta s. What is s? S is 2πRh. What is delta s? Delta s you have to calculate from here. This will be the proper value of the surface area. Clear, this is the, so beta every type of questions we have done here beta. Listen, one more question is there, listen, this is something different question beta, क्योंकि हमने जो फंक्शन किए हैं अब तक 5 फंक्शन किए हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, पावर्स। अब बेटा जो है एक ऐसा है जिसमें 2 फंक्शन मिक्स्ड हैं, तो लंबा क्वेश्चन होगा काफ़ी,
बहुत लंबा चलेगा क्वेश्चन। उसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। जैसे क्वेश्चन है, लिसन, न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल इज देयर, लिसन 1 मिनट। Listen, if I am speaking the statement, write it. If two resistors R1 is equal to 4 plus minus 0.5 ohm and R2 is equal to क्लियर, दो रेजिस्टेंस है आपके पास, क्लियर। इफ बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन व्हाट विल बी द प्रॉपर रेजिस्टेंस इन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, व्हाट विल बी द प्रॉपर वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। बेटा लिसन, नाउ यू नो इन फ्रॉम योर 10th क्लास इन पैरेलल कॉम्बिनेशन 1/Rp was equal to 1/R1 plus 1/R2. This implies Rp is equal to R1 R2 upon R1 plus R2. बेटा इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई का केस भी है एंड इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो हैज एडिशन फंक्शन। तो अब कैसे करेंगे, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ इसका। पहले तो मल्टीप्लाई वाला सोल्व करो, उसकी प्रॉपर फॉर्म निकालो, फिर एडिशन वाला सोल्व करो, प्रॉपर फॉर्म निकालो, देन यू कैन डू इट by taking as division. You can do it by simple way, but this will be very long beta, this will be very long. Now beta I am telling you a simple concept beta. Listen, in this type of question in which mixed functions are there, multiply and addition, both functions are there, mixed functions are there, a simple way is there. Listen, what is the way? 1/Rp is equal to 1/R1 plus 1/R2 is there. Take differentiation on both sides. Take beta in mathematical tools, Atul sir has told you that how you have to take the differentiation. Beta listen, Atul sir has told you that what is the differentiation of x raised to the power n with respect to x. Then you do that. If y is x raised to the power n, then what will be delta y upon delta x? Tell me, what will be delta y upon delta x? As limit delta x is very very small. तो आपने कैसे किया था? The power comes in front of it and -1 will be there in the power. In this way, you have done it. Okay, in mathematical tools, you have done it. Now beta listen. Now we are to take the differentiation of both sides. Listen. This is 1/Rp. What will be differentiation of 1/x? इसको ऊपर लेके जाएं, power will be x to the power -1. Now listen, what will be differentiation? -1 will come in the front, -1, and -1 will take place in the power. It will be -x to the power -2. Now again it can be written as -1 upon x square. Listen again beta, what will be differentiation of 1/x? Listen, it can be written as x to the power -1. How will you differentiate it? -1 will come in the front and 1 minus will be in the power. Now it can be simply, so it is the differentiation of this respect to x. Okay, final beta listen, differentiation of both sides. Now 1/x has differentiation -1/x square, then 1/Rp will have differentiation, tell me, -1/Rp square into delta Rp into beta delta Rp. Okay, delta Rp beta क्यों आया? Because this is delta y by delta x is equal to this, sorry, this is y, then delta y by delta x will be this. What will be delta y? Delta x will be multiplied here, delta Rp. Now tell me here, it will be -1/R1 square delta R1.
what will be here? Minus 1 by R2 square delta R2 minus all cancel with each other. Then we get delta RP by RP square is equal to delta R1 by R1 square plus delta R2 by R2 square. Now we have to find delta RP. Then delta RP is equal to this RP square will be multiplied to it. Then it will be listen. It will be delta R1 by R1 square plus delta R2 by R2 square. This can be written as. Now beta, put all the values. Listen, what is the value of R1? Tell me, what is the value of R1? 4. What is the value of delta R1? 0.5. What is the value of R2? 16. What is the value of delta R2? 0.5. What is the value of RP? What is the value of RP? You know, RP is equal to R1 R2 upon R1 plus R2. Simply put value of R1 and R2 from here, and we can go to the value of, we can get the value of RP. Everything I know, so I can easily calculate the value of delta RP. But how will you write in proper form? Proper form can be written as RP plus minus delta RP. RP you will get here and delta RP you will get from here. Clear beta? In this way, by taking differentiation you can solve these all. बेटा ये नहीं कि डिफरेंशिएशन से यही होगा, डिफरेंशिएशन से सारे एरर निकल जाते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन सभी एरर निकल जाते हैं बेटा, वो फिर काफ़ी लंबे पड़ जाते हैं. ओके, सो दिस इज फॉर द डिफरेंशिएशन मेथड. क्लियर बेटा? इफ एनी प्रॉब्लम यू फेस by doing these questions you can easily talk to us. Clear beta? Beta, see one thing, now this chapter is end beta. Now one thing is there, one question is there. Listen beta. बेटा एक लास्ट एक सिंपल वेरी सिंपल थिंग इज देयर. इफ x इज इक्वल टू a into b, okay, if x is equal to a into b, suppose a into b raised to the power 3, suppose, then you know what will be delta x by x, relative error. You know everyone, delta a by a plus minus 3 delta b by b. बेटा एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आपको a और b के रिलेटिव एरर दिए गए हैं और इसका रिलेटिव एरर को आपको पूछा गया है, तो सिंपल आप सपोज कीजिए relative error in A is 0.1, relative error in B is 0.2, then what will be relative error in X? Put delta A by A 0.1, put delta B by B 0.2, but here multiply by 3, so 0.6, it will be 0.7 easily. Beta, percentage error and relative error are easily found in case of multiplication, in case of division, and in case of powerful questions. Beta, now listen. Now if this question, if 3 is not here, then it will not be there. Okay, if now last thing, if percentage error in A and B is given and percentage error in X you have to determine, then do one thing, multiply both sides by 100. 100, 100, 100. This is given, suppose this is 2%, this is 3%, this will be 5%. Okay, easily you can do. Beta, in the next I will provide you the assignment of about 15 to 20 questions of error. Okay, and you have to do it by yourselves. If any problem you face beta, then on your WhatsApp group which I have joined you, you can ask any question. Okay beta, thank you very much.